Hello, good afternoon. My name is Cancel Agrawal. I welcome you on behalf of entire team of CGA Legal to this CGA Legal Live Meet. CGA Legal is a platform where we bring to our subscribers the detailed analysis of various quantitative aspects of GST through our newsletters and webinars. As we know that Honorable Finance Minister has presented the Union Budget for the financial year 22-23 in the Parliament on 1st of February 2022. While the industry was expecting some of the promising changes in goods and services tax, like abolishing of multiple tax structure into a single tax, bringing of petroleum product into GST net, and seamless flow of ITC, etc. However, government has in fact made the ITC provisions full of twists and turns. So the today's webinar aims to analyze in detail the GST proposals made through Budget 2022 and their implications on the industry. The deliberation will be taken by C.A. Chitresh Gupta and C.A. Shilpi Gupta. C.A. Chitresh Gupta is a senior member of CGA Legal and having vast knowledge and experience into indirect taxes. C.A. Shilpi Gupta is a senior member of CGA Legal and have been advising multiple multinational companies in managing their indirect tax compliances. The deliberation will be followed by a question answer session. If anyone wishes to ask question in between of the deliberation, you may please type your question in the chat box provided and the lower of the box. May I ask C. Chitresh Gupta sir to start his deliberation. Over to you, sir. Yeah, thank you, Pranjit, and good afternoon to all of you. I welcome you all in this webinar on budget proposal under GST. So let me share my screen. I hope my screen is visible to everybody. Yes, sir, the screen is visible now. Yes. Yeah. So I'll be dealing with the proposals made under GST in detail. If you see the budget, if you see in case of GST, lot of changes is already happening day in and day out by way of various notifications which are being issued by the CBIC on the recommendation of the GST Council. But in the GST in the finance bill, generally we expect the changes which are required to be made through amendment in the CGST Act itself. So the changes which are being proposed under Finance Bill 2022 are basically the changes which they are making, which they will be making in the CGST Act or IGST Act or UTGST Act. So I'll be discussing all the changes which has been proposed under Finance Bill 2022. So if we see the Finance Bill 2022, there are 25 number of clauses which are there under the Finance Bill, starting from clause 99 to clause 123, which contain the changes with respect to GST. तो इसमें से जो मेरे 19 clause हैं that pertain to CGST and 3 clauses pertain to IGST and 3 clauses pertain to UTGST. And the amendment which are being proposed under IGST and UTGST are just the corresponding amendment which are going to be made under CGST law. This table shows the list of various provisions which are going to be amended by way of amendment proposed under Finance Bill 2022. Like enhancing the scope of condition for availment of ITC, delinking of Section 43A with condition for availing ITC, and so on and so forth. So I'll be discussing these changes in detail. Now let us first come to the first change, the availment of ITC made more stringent. And the seamless flow of ITC between various stakeholders, not anymore. Meaning thereby जो हमारे जो changes propose हुए हैं Finance Bill 2022 में, उसने अब उसको जब वो notify हो जाएंगे तो availment of input tax credit will become more stringent
and it will be very difficult to comply with the ITC provisions. So I'll be discussing those provisions in detail. First is enhance the scope of conditions of ITC availment. हम सबको पता है जो है हमारा एक सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है जिसमें देयर आर वेरियस कंडीशन व्हिच आर बीइंग कंटेन्ड फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट. In those conditions, now the finance bill proposed to insert a one more condition, and it says the details of input tax credit in respect of said supply communicated to such a registered person under section 38 has not been restricted. Meaning thereby one more condition has been added for the claim of input tax credit, and it says कि जो detail communicate हुई है as per GST 2B, that should not be restricted under section 38 in order to avail the input tax credit. So I'll be discussing what are these. तो अगर मैं देखूं आज की डेट में अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट करना है तो व्हाट क्लेम करना है तो व्हाट आर द कंडीशन. फर्स्ट इज क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अलाउड if the invoice or debit note or other document are in possession of the taxpayer. The second is ITC is available on receipt of goods or services. So ये second condition already थी. Then the third condition was also there. Supplier has paid the tax to the government. And the fourth condition was return under section 39 is filed by the recipient. Then the fifth condition, which was notified recently with effect from 1st January 2022, was that the details of invoice or debit note to be furnished by supplier in the statement of outward supplies, and such detail have been communicated to the recipient in the manner specified under section 37. Meaning thereby जो इनवॉइस है डेबिट नोट है वो जो है सप्लायर को फर्निश करना पड़ेगा इन GSTR 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, एंड दोज डिटेल्स शुड बी कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट. Only then the credit will be allowed to the recipient. So this was the fifth condition which was inserted. Now this budget has proposed one more condition, which is the sixth condition, and it says details of input tax credit in respect of said supply communicated to registered person under section 38 has not been restricted. Meaning thereby जो पहली चीज तो ये कि सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी और या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से जो है उन्होंने डिटेल फाइल कर दी और वो डिटेल कम्युनिकेट हो गई. बट वो जो डिटेल कम्युनिकेट हुई है दोज डिटेल sorry should not be restricted under section 38. So meaning thereby when the taxpayer satisfied all these six conditions, only then he is eligible for claiming ITC. So now let us discuss कि किस किस केसेस में वो बेसिकली किस किस केस में कम्युनिकेशन और डिटेल विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द रिसिपिएंट, हेंस द क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड टू द रिसिपिएंट. तो फॉर दैट पर्पस अभी मेरा एक सेक्शन 38 होता था जो डील्स करता था फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई. मीनिंग देयर पे जब मेरा ओरिजिनली जीएसटी लॉ आया तो इसमें टू वे मैचिंग कॉन्सेप्ट इन्वेस्टेज किया गया था कि जो है सप्लायर जो है अपनी GSTR 1 फाइल करेगा. बेस्ड ऑन दैट GSTR 1 GSTR 2 ऑटो पॉपुलेट होगी, एंड इन केस ऑफ GSTR 2 द रिसिपिएंट कैन accept, modify and reject the details of the inward supply. And based on these two returns, GSTR 1 and GSTR 2, GSTR 3 will be auto populated and the taxpayer will pay the balance tax liability and file the GSTR 3. Now since the entire matching concept has not been implemented under GST and GSTR 2 and GSTR 3 has not seen the light of the day, now the present finance bill 2022 has totally substituted the section 38 and said कि now there is no need to file GSTR 2. Further, this section 38 says the details of outward supplies as well as such other supplies as may be prescribed. Meaning thereby outward supplies तो वो ही जो किसी सप्लायर ने जो है B2C सप्लाईज करी है या B2B सप्लाईज करी है
and such other supplies as may be prescribed, meaning thereby there may be other supplies also like import जो होते हैं या जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो क्रेडिट है, all these will be reflected in auto generated statement which will be the GSTR 2B, and the credit which is available under GSTR 2B will be of two types. First, on the inward supplies on which ITC is available to recipient, and second on the inward supplies where ITC is wholly or partially restricted to the recipient. Meaning thereby the GSTR 2B will be having two type of details. First, pertain to the inward supplies on which credit is fully available. Second detail will pertain to the supplies on which credit has been restricted. And the amendment which has been brought in says that the credit which has been restricted under section 30A will not be allowed. Now let us see what are the cases wherein the credit will be restricted to the recipient. इसमें भी उन्होंने 6 केसेस बताए हैं किस किस केस में क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट होगा, तो वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहला जो केस है वो है डिटेल्स ऑफ सप्लाईज फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मीनिंग देयर पे आपने किसी सप्लायर से कुछ परचेज करा है और उस सप्लायर ने नया रजिस्ट्रेशन लिया है, तो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम व्हिच विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय वे ऑफ रूल्स कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि अगर आप विद इन दिस पीरियड आप उससे कुछ खरीदते हैं, so in that case the ITC for certain period of time can be restricted. So government need to clarify that period and provide some more detail in respect of this. The second is supplier has defaulted in payment of tax and such default has continued for prescribed period. तो सर अगर इस कंडीशन को हम ध्यान से देखें, ये कहती है कि सप्लायर ने जो है टैक्स पे नहीं करा और वो जो डिफॉल्ट जो है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हैज कंटिन्यूड, जो ये पीरियड है दैट विल बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स. नाउ इफ यू सी ये जो क्लॉज है दिस इज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी. जो हमारी कंडीशन थी, वन ऑफ द कंडीशन वाज फॉर क्लेमिंग आईटीसी वाज दैट द सप्लायर शुड हैव पेड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. अब यहाँ पर ये कहते हैं the supplier has defaulted in payment of tax and such default has continued for prescribed period, meaning thereby this clause is in contradiction with section 16 subsection 2 clause C. So again there will be a challenge for claiming the input tax credit कि how the recipient will check कि whether the tax on a particular supply has been paid by supplier to the government or not. But the responsibility has been casted on the shoulders of the recipient to ensure that the payment by the supplier has been made to the government. The third condition is output tax payable as per GSTR 1 exceeds the output tax liability paid through GSTR 3B and such difference exceed the prescribed limit, meaning thereby अब जो रिसिपिएंट है उसको काफी चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी कि सप्लायर ने जो सप्लायर ने करी है या नहीं करी है उसका क्रेडिट उस पर डिपेंडेंट होगा, मीनिंग देयर बाय जो क्रेडिट अवेलमेंट है बाय रिसिपिएंट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन द जीएसटी कंप्लायंस ऑफ द सप्लायर. मीनिंग देयर बाय अगर आप थर्ड कंडीशन देखेंगे, थर्ड कंडीशन भी मेरी ये कहती है कि अगर उस सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में ज्यादा सप्लाई दिखाई है और उसने जो है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम दिखाई है जीएसटीआर 3B में और ये डिफरेंस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है, द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट मींस द लिमिट टू बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स, तो उस केस में भी रिसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा. नाउ द गवर्नमेंट आल्सो नीड टू कम आउट विद अ प्रोसीजर हाउ द रिसिपिएंट विल इंश्योर कि भाई जो उन्होंने जीएसटीआर 1 में सप्लाई दिखाई थी उस सब पे सप्लायर ने जीएसटीआर 3B में टैक्स पे कर दिया या नहीं कर दिया. तो ये भी अब आपको रिसिपिएंट को ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. नाउ द फोर्थ कंडीशन इज ITC availed by supplier exceeds the ITC available in his GSTR 2B and such difference
डिफरेंस एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, मीनिंग देयर बाय अब मुझे रिसिपिएंट को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि जो सप्लायर ने अपना आईटीसी क्लेम करा है, that should not exceed the ITC available to supplier in his GSTR to be by specified percentage, meaning thereby अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा रिसिपिएंट को कि जो सप्लायर है वो अपना आईटीसी सही से क्लेम कर रहा है और विद इन लिमिट क्लेम कर रहा है। अगर वो विद इन लिमिट क्लेम नहीं कर रहा है और जीएसटीआर 2B से ज्यादा क्लेम कर रहा है एंड दिस डिफरेंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, देन आल्सो द क्रेडिट ऑफ रिसिपिएंट विल बी डिनाइड। The fifth condition is supplier has defaulted in discharging his tax liability in accordance with section 49 subsection 12, that is the minimum payment by cash, meaning thereby जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि एक अभी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले एक रूल इंसर्ट करा था अंडर सीजीएसटी रूल्स, रूल 86B, जिसमें हम कहते थे 1% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी हैज टू बी पेड इन cash and only 99% of the tax liability can be paid through input tax credit in case of a specified taxpayer। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर वो सप्लायर इस रूल में फॉल करता था और उसको जो है जो अपनी टैक्स लायबिलिटी थी वो 1% कैश में पे करानी थी और उसने 1% कैश में पे नहीं कराई, देन आल्सो द क्रेडिट ऑफ द रिसिपिएंट विल बी restricted। So again, it will be a challenge for the recipient to ensure whether whether the supplier was falling under that rule or not। तो चित्रेश जी ये कैसे पता रेसिपिएंट कैसे पता करेगा इस चीज का? ये तो बड़ा मुश्किल काम है इन सब चीज कंडीशंस को। Yes, सुनील जी, ये it's a onerous burden which has been put on the shoulders of the recipient, and in many cases these conditions are very difficult to check actually। So now it has to be seen what procedure and safeguard the government is going to prescribe by way of rules, how this will be checked by the recipient actually, because the recipient does not have most of the information available right now। अब जैसे कि उसके 2B में सप्लायर के 2B में कितना आ रहा है और उसने अपनी रिटर्न में कितना क्लेम करा है, मुझे तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो सर मेरे को पता कैसे चलेगा गवर्नमेंट मशीनरी कहाँ गई सर? वेयर इज द गवर्नमेंट मशीनरी हैज टू सी ऑल दीज, और सारा कुछ पब्लिक पे डाले जा रहे हैं, तो बड़ा अजीब सी पॉइंट है। दिस इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन जो कि मुझे लगता है कि जो जीएसटीआर 2B है they will be enhancing the feature of GSTR 2B and many of these details will be reflecting in your GSTR 2B only। तो उसके बेसिस पे ही जो डिटेल हमें अवेलेबल होंगी, या हम अगर जीएसटी की साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि जैसे रिटर्न फाइलिंग स्टेटस वगैरह, तो वी हैव टू गो बाय दैट वे ओनली, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट। तो इट हैज टू बी सीन कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या प्रोसीजर बनाती है, क्या रूल्स लाती है कि रिसिपिएंट इसको कैसे इंश्योर करे। फर्दर देयर कैन बी वन मोर थिंग कि गवर्नमेंट करे तो जा रही है, लेकिन इनफैक्ट इफ यू सी अंडर द अर्लियर इंडायरेक्ट टैक्सेशन रिजीम, एक जो हमारा अभी भी प्रेजेंटली क्लॉज है कि भाई रिसिपिएंट को तभी क्रेडिट मिलेगा जब सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया। इस पे काफी लिटिगेशन थी अर्लियर रिजीम में भी, जो कि कई लॉ में जैसे डीवैट एक्ट में था ये प्रोविजन और भी कुछ जगह पे ये प्रोविजन था। तो वहां पर हाई कोर्ट्स ने और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जो है जो दिल्ली हाई कोर्ट का केस है जो सुप्रीम कोर्ट में भी गया राइज इंडिया का, उसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई अगर रिसिपिएंट का कोई फॉल्ट नहीं है तो क्रेडिट कैन नॉट बी डिनाइड टू द रिसिपिएंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर। सिमिलरली अभी डीवाई बैथल का एक जजमेंट है, आई थिंक मद्रास हाई कोर्ट का है, जिसमें जो जीएसटी रिजीम का ही है, उसमें भी सप्लायर ने टैक्स नहीं जमा कराया था और रिसिपिएंट का क्रेडिट डिसअलाउ कर रहा था डिपार्टमेंट। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें भी हेल्ड करा कि भाई सप्लायर वो रिसिपिएंट का तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। अगर डिपार्टमेंट को टैक्स रिकवर करना है तो डिपार्टमेंट शुड फर्स्ट इनिशिएट द प्रोसीडिंग अगेंस्ट सप्लायर। द डिपार्टमेंट कैन नॉट इश्यू द प्रोसीडिंग फर्स्ट अगेंस्ट द रिसिपिएंट because he is not the primary person who is liable for this payment, and if the government is not able to recover the taxes from the supplier because of the reason the supplier is missing or some other reason, then the government can proceed to recover the tax from the recipient। So now
in my view, the fate of these provisions has to be seen, and these provision has to be judicially tested. And in my view, being because these provisions are very stringent, it is going to result in lot of litigation, and I think the life is not going to be easy for the ITC. सर इसमें एक सजेशन है, अगर आप बताएं कि हमने सजेशन देना शुरू करा है पार्टीज को कि आप जीएसटी पोर्शन को होल्ड करें जब तक आपके 2E में दिखे नहीं. वुड बी बेटर आई थिंक. सुनील जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हम क्वेश्चन एंड में ले लें, जो कि क्या है कि इसमें काफी सारी स्लाइड है और काफी सारे क्वेश्चन आपके कवर भी हो जाएंगे. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सुनील जी, थैंक्स अ लॉट. तो मेरा जो छठा पॉइंट है, सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब. तो वो फिर उन्होंने एक पावर भी रिजर्व कर ली कि वो सप्लायर को नोटिफाई कर देंगे कि जिससे अगर सप्लाईज आप ले रहे हो, then in that case you will not be eligible for ITC. Now if you see the section 38 essentially enabling provision to provide for GST 2B. तो पहले हमारा यही कंफ्यूजन था कि हम 2A के बेसिस पे करेंगे या 2B के बेसिस पे करेंगे. तो बेसिकली दी सेक्शन 38 is also giving will be giving the legal backing to GST 2B, which will be notified by way of rules. And the fact that the recipient does not, अब basically ये मैंने डिस्कस कर लिया, so I'll be moving forward. What will be the issues? काफी इशू डिस्कस हो गए, फिर भी just for clarity I'll read it out. Not practically possible for recipient to check all the above restriction for all their supplier before claim of ITC. जो कितनी सारी कंडीशन होगी, अगर आप देखें इन टोटल मेरी 5 कंडीशन पहले थी और 6 कंडीशन और हो गई, तो I have to recipient has to meet 11 conditions before claiming the input tax credit, which is almost impossible and very difficult to do. Then what will be the status of ITC claim during the period when default occurred and when it is reflected in 2B? भाई उसने पहले डिफॉल्ट कर दिया, जो मेरा 2B इज ए स्टैटिक स्टेटमेंट जो कि एक 14 तारीख को जनरेट हो जाती है और मुझे 3B जो है 20 तारीख तक फाइल करनी होती है. तो जब मेरा 2B जनरेट हुआ तो उसमें तो मुझे पता ही नहीं था कि सप्लायर ने पेमेंट करी या नहीं करी, जो कि उसमें अभी स्टेटस भी नहीं आता 3B फाइलिंग का. और वैसे भी जब मेरा 2B पहले जनरेट हो गया तो उस पीरियड की 3B का स्टेटस उसमें आ भी नहीं सकता. तो ये फिर बाद में ही पता लगेगा कि उसने उसको जमा कराया था नहीं कराया था. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड इंटरेस्ट विल हैव टू बी पेड. तो वो कैसे होगा, आई विल बी कमिंग इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड. Then how will such restricted ITC be claimed, specifically keeping in mind the time limit under for claim of ITC under section 16 subsection 4? Meaning thereby अगर सप्लायर में जो है ITC बेसिकली सप्लाई प्रॉपरली नहीं दिखाई और आपके वो GST 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो देयर विल बी इशू टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट कंसिडरिंग द टाइमलाइन which is contained under section 16 subsection 4. The another big issue which may come is that there can many times there are clerical mistakes by the supplier while filing GSTR 1, like B2B supplies shown as B2C supplies and wrong GSTN mentioned. Now, if you see the conditions which are being given under GST law, these are very stringent. जो मेरा section 16 subsection 2 clause AA है, वो कहता है the supplier should have furnished details of outward supplies and such details should be communicated to the recipient in the manner prescribed. Meaning thereby their mere furnishing is not enough by the supplier, the details should be communicated. So both are important. First is the furnishing, second is the communication. तो अगर उसने B2B supplies मेरे सप्लायर ने गलती से B2C दिखा दी, तो whether there will be any communication between supplier and recipient, in my view no. अगर उन्हें GSTN गलत दिखा दिया, then whether there will be proper communication, in my view no. Now the big question which is coming in everybody's mind and in my mind also, whether due to such kind of clerical mistake, suppose मेरा 1 करोड़ का ITC था, उसने जो सप्लाई थी उस पे जो GST 1 करोड़ का था उसने
रॉन्ग जीएसटीएन में दिखा दिया और ये हमें बाद में पता लगा और वो मेरा टाइम लिमिट करेक्शन की निकल गई थी, तो क्या गवर्नमेंट मुझे 1 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई कर देगी ओनली बिकॉज ऑफ द क्लरिकल मिस्टेक ऑफ द सप्लायर? That is the big question which is coming by this kind of draconian law, where the small mistake can result in a loss of crores of rupees. So it is advisable that we should be reconciling GST 2B on monthly and basis, and proper action should be taken. So ठीक है, ये सारे प्रोविजन प्रपोज्ड हैं एंड दीज विल बी नोटिफाइड आल्सो. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट नीड्स टू बी डन नेक्स्ट? फर्स्ट इज अवेलमेंट ऑफ आईटीसी बेसिस जीएसटीआर 2B ऑन मंथली बेसिस. तो सर अब हमें जो है आईटीसी जो क्लेम करना है वो जीएसटीआर 2B के बेसिस पे ही करना है, एंड द रिकंसिलिएशन हैज टू बी मोर स्ट्रिंजेंट एंड रोबस्ट. देन वी कैन हैव द स्ट्रिंजेंट वेंडर एग्रीमेंट्स, कि हम उसमें क्लॉज डालें दैट इफ देयर इज एनी लॉस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट due to fault of the supplier at a future date, in that case that loss has to be indemnified by the vendor. These kind of clauses should be incorporated in the vendor agreement or purchase orders. The third can be aligning of payment of vendors only after inward supplies details are reflected in GSTR 2B. हम ये भी कह सकते हैं कि भैया हम तो पेमेंट आपको टैक्स की तभी करेंगे जब आपका जो है क्रेडिट GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो गया. So these kind of measures can be taken to ensure the proper flow of credit. Now let us come to another section of my presentation, two-way matching concept, public new returns scrap. तो सर जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस करा था कि जब ओरिजिनली जीएसटी आया था इसमें टू-वे मैचिंग कॉन्सेप्ट इन्वेस्टर्स था. जीएसटीआर 1 थी, जीएसटीआर 2 था, जीएसटीआर 3 थी. जीएसटीआर 1 के बेसिस पे जीएसटीआर 2 बनती थी जिसमें वो एक्सेप्ट रिजेक्ट मॉडिफाई करता था रिसिपिएंट, और फिर इन दोनों के बेसिस पे मेरी जो है जीएसटीआर 3 बनती थी, और उसके बेसिस पे जो रिसिपिएंट है वो अपना एप्लीकेबल टैक्स पे करता था और रिटर्न फाइल करता था. जो कि ये रिटर्न मैकेनिज्म जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पाया ड्यू टू वेरियस टेक्निकल ग्लिचेस ऑन द जीएसटी पोर्टल. तो उससे रिलेटेड जो सेक्शन थे जो मेरे को टू-वे मैचिंग का प्रोसेस बताते थे कि हाउ दिस टू-वे मैचिंग विल बी डन, दो सेक्शन हैज बीन ओमिटेड. तो सेक्शन 42 and 43 was relating to this two-way matching concept. So since two-way matching has not been implemented, this section has been omitted from the CGST Act. Now the another is section 43A. जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि जब ये टू-वे मैचिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ठीक है टू-वे मैचिंग को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसकी जगह पे हम एक न्यू रिटर्न प्रोसेस ले आते हैं. तो जब वो न्यू रिटर्न प्रोसेस ला रहे थे तो टू अनेबल द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रिटर्न प्रोसेस इन्होंने एक अनेबलिंग सेक्शन उसमें डाला, सेक्शन 43A. बट अगेन जो न्यू रिटर्न प्रोसेस था दैट वाज नॉट एबल टू सी द लाइट ऑफ द डे, and that new return process was also scrapped by the government, and ultimately the government thought of enhancing the present returns, that is GSTR 1 and 3B, and continue with these returns only. तो जो उन्होंने enabling section डाला था for the introduction of new GST return which is section 43A is no more relevant, so this section has also been proposed to be omitted. So this was the recommendation of the GST Council, 43rd GST Council meeting. Now, since section 43A, which was dealing with the new return process, has been omitted from the CGST Act, तो जहां पर भी इस सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है, जिस भी सेक्शन में इस सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है वो सेक्शन से वो रेफरेंस इन्होंने हटा दिया. तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में एक रेफरेंस दिया हुआ था सब्जेक्ट टू प्रोविजन सेक्शन 41 और सेक्शन 43A. The tax charge in respect of such supply has been actually paid to the government. तो जो कि सेक्शन 43A ही अब जो है ओमिट होने जा रहा है, तो उन्होंने सेक्शन 43A का भी रेफरेंस इन्होंने प्रपोज सेक्शन में हटा दिया.
So it is a consequential amendment in section 16, subsection 2, clause 3. Now let us come to the changes in the time limits. So this is a welcome amendment which has been proposed to be done by way of this Finance Bill 2022. अगर हम देखें सर, हमें काफी ज्यादा लिमिटेशन पीरियड दिए हुए हैं सीजीएसटी लॉ में, जैसे कि वी हैव ए टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन वी हैव ए टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट, देन अमेंडमेंट इन जीएसटीआर 1, then amendment in GSTR 3B, then amendment in GSTR A. So various time limits has been given. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के केस में जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है, वो मुझे कहता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम क्लेम कर सकते हैं, that can be claimed for a financial year, that can be claimed before the due date of furnishing GSTR 3B of September month of the next financial year, or furnishing or 11th annual return, whichever is earlier. Meaning thereby जो क्रेडिट मेरा फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, that can be claimed before 20th October 2021. तो बेसिकली इसमें ये प्रपोज करा गया है कि इस टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया, और इस टाइम लिमिट को बढ़ा के अब क्या करा है, इन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ 30 ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर की जगह इन्होंने कर दिया till 30th November of next financial year. Now the revised timeline is 30th November of the next financial year, or actual date of furnishing annual return, whichever is earlier. So meaning thereby, अगर जैसा कि मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021 का एग्जांपल लिया, तो अगर मैं पुराने रिजीम के जाऊं तो मुझे इसका क्रेडिट लेना था 20 अक्टूबर 2021 तक। तो अब मैं नई रिजीम के हिसाब से जाऊं तो मुझे इसका क्रेडिट लूंगा बेसिकली 20 नवंबर 2021 तक। वाई सो? बिकॉज इन्होंने जो 30th नवंबर जो दिया है, दैट इज ए स्टैटिक डेट। अर्लियर द लिमिटेशन डेट वाज लिंक्ड टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B। नाउ इट इज नो मोर लिंक्ड टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B, जो आपकी अक्टूबर की जीएसटीआर 3B है, दैट विल बी फाइल्ड बाय 20th नवंबर। तो जब आपने 20th नवंबर को जीएसटीआर 3B फाइल कर दी, तो जो आपको क्रेडिट क्लेम करना है वो आप 20th नवंबर तक ही करोगे, अनलेस अंटिल यू फाइल द बिलेटेड जीएसटीआर 3B एंड अप टू 30th नवंबर। तो टेक्निकली इन माय व्यू इट इज नॉट 30th नवंबर, इट इज द 20th नवंबर व्हिच इज द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो सिमिलर इज द केस फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट, जो अमेंडमेंट मेरी क्रेडिट नोट की हो सकती है। एंड सिमिलर काइंड ऑफ अमेंडमेंट हैज बीन मेड फॉर अमेंडमेंट इन जीएसटीआर 1 आल्सो। तो जीएसटीआर 1 में भी जो मेरी अमेंडमेंट हो सकती है, वो उसकी डेट इन्होंने 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कर दिया। बट अगेन द व्यू व्हिच कम्स इज the amendment has to be made in the GSTR 1. So the October GSTR 1 which has to be filed in November, so due date of furnishing GSTR 1 becomes the due date. So virtually in my view the date has been extended by a month. Similarly, if you see in case of GSTR 8, the GSTR 8 needs to be filed. GSTR needs to be filed within 10 days from the end of the month. So in that case, earlier the word used is due date of furnishing GSTR 8 for the month of September. Now if you see the due date of filing GSTR 8 for the month of October is 10th November. So in that case the date will be 10 unless until you file the GSTR 8 late up to 30th November. Maybe this amendment may have been done to provide the more time to the corporate to finalize the ITC and carry out the amendments. Now let us come to the proposed amendment in GST return provisions. Now let's first discuss the amendment in GSTR 1, which is the statement of outward supplies. The first is conditions and restrictions in filing GSTR 1. तो जो मेरा सेक्शन 37 है, सबसेक्शन 1 है,
उसमें उन्होंने जो है जो अमेंडमेंट करी है उसमें बेसिकली दे हैव इंसर्टेड द वर्ड रिस्ट्रिक्शंस. तो बेसिकली दे हैव इंसर्टेड द वर्ड रिस्ट्रिक्शन इन furnishing the details of GSTR 1 as well as communication of details of GSTR 1 to the recipient, meaning thereby now the government has the power to prescribe restrictions and conditions for furnishing GSTR 1 as well as the government has the power to prescribe conditions and restrictions for communication of details to the recipient. So maybe the government is willing to impose certain restrictions, and some of the restriction has been imposed in this proposed finance bill also. I'll be discussing that. The second is subsection 2 of section 37 has been omitted. It is basically a consequential amendment. Reason being, the two-way matching concept was never been implemented, and the provisions which were related to two-way matching concept has been deleted. Now, the restriction which I was talking about in case of GSTR 1, now I was telling you the government has inserted enabling provision and given the power to bring some restriction in filing of GSTR 1. So, in pursuance of which the government has prescribed that, inserted subsection 4 and prescribed that you have to file the GSTR 1 sequentially, meaning thereby अगर आपने previous tax period की GSTR 1 फाइल नहीं करी है तो आप subsequent period की GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते. तो पहले ऐसा नहीं था. GSTR 1 एटलीस्ट सिक्वेंशली फाइल नहीं होती थी, आप जो है आगे पीछे कर सकते थे. 3 भी जरूर सिक्वेंशली फाइल होती थी, लेकिन GSTR 1 में ऐसा सिक्वेंस मेंटेन करने का प्रोविजन नहीं था. So they have brought in the provision for furnishing the details in a sequential manner. Further, they have also given the power to the government to prescribe the registered person or class of registered person who can who may be given relaxation with respect to sequential filing of GSTR 1. तो गवर्नमेंट के पास enabling provision भी है. जब भी उसको लगेगा एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन को ये रिलैक्सेशन देनी है कि वो सिक्वेंशली GSTR 1 फाइल ना करें, तो वो रिलैक्सेशन दे सकते हैं बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन. Further, this amendment in our view is also important. Reason being, when we are linking availment of GST ITC on the basis of GSTR 2B, so it all the more make more sense that the GSTR 1 has to be filed sequentially. Otherwise, there will be issue in claiming input tax credit by the recipient also. Then another amendment is in the due date of furnishing GSTR 5 for non-resident taxable person. तो सर हम सभी को पता है जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो GSTR 5 फाइल करते हैं, एंड द GSTR 5 needs to be filed within 20 days from the end of calendar month. Now this 20 days has been replaced by 13 days. Now GSTR 5 has to be filed within 13 days from the end of calendar month or within 7 days after the last day of the period for the day of the registration, whichever is earlier. So basically there is no change except 20 days has been replaced by 13 days. So this period has been reduced. Now let us come to the amendment which has been made in GSTR 3B. First is time limit and delinking of section 37 and 38. तो पहले जो मेरे सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 था वो स्टार्ट होता था सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 और 38. एनी रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर फर्निशिंग और ये सब जो था, बेसिकली जो सेक्शन 37 था और सेक्शन 38 था दैट कंटेन्स द प्रोविजंस फॉर टू वे मैचिंग. तो जब वो मेरा टू वे मैचिंग ही इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने कहा सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 में इन सेक्शन का रेफरेंस भी हम हटा देते हैं. So again, it is a consequential amendment, and they have removed the reference of section 37 and 38 in section 39 subsection 9. Further, as I already discussed, any correction in GSTR 3B
now can be made up to 30th November following the end of financial year or actual date of furnishing 11 annual return whichever is earlier. तो आपको एक महीने का ज्यादा टाइम मिल गया है for carrying out the correction. So this is a welcome change. The second is additional restriction in filing GSTR 3B if GSTR 1 not filed. अभी क्या होता था सर, मेरे को ये तो मेरा प्रोविजन था कि GSTR 3B मुझे सिक्वेंशियली फाइल करनी है, लेकिन मेरा ये प्रोविजन नहीं था कि अगर मैंने GSTR 1 फाइल नहीं करी तो मैं 3B फाइल नहीं कर पाऊंगा. तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन अमेंड कर दिया है और गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर आपने GSTR 1 भी फाइल नहीं करी है तो you will not be allowed to file GSTR 3B. So it is very important provision. So let's read it out. A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return of any of the previous tax periods or details of outward supplies under section 37 subsection 1 for the said tax period has not been furnished by him. So meaning thereby अब taxpayer को अपना GSTR 1 और GSTR 3B जो प्रीवियस पीरियड की है वो पहले जमा करनी पड़ेंगी, उसी के बाद वो सब्सिक्वेंट पीरियड की GSTR 3B फाइल कर पाएगा. So now GSTR 3BB or GSTR 1B both has to be filed sequentially also. Further, in this section also the government has been given the power to allow the registered person or class of registered person to furnish the return even if the return has not been furnished for one or more tax periods. Meaning thereby the government को ये power दे दी गई है in case of class of registered person or class of person to notify that the relaxation in certain cases. तो गवर्नमेंट के पास पावर है रिलैक्सेशन देने की by way of notification. So in our view it is basically a disciplinary amendment and will bring more tax compliance because उसे sequentially फाइल करना पड़ेगा और वो GSTR 1 फाइल करे बगैर आगे बढ़ नहीं सकता. तो इसका भी जो मुझे लॉजिक लगता है वो यही है, जो कि जैसे कि हमने देखा कि जो ITC अवेल करने की कंडीशन में चेंज आया है तो उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि जो उन्हें आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी सप्लायर ने डिक्लेयर करी है और जो टैक्स पेबल ऑन सप्लाईज है विच हैज बीन डिक्लेयर्ड इन GSTR 3B उसमें स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. तो अगर वो सिक्वेंशियली फाइल नहीं करेगा सप्लायर तो वो कंडीशन को भी टेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो जो मेरा जो चेंज आया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज BA रेड विद सेक्शन 38, तो उसके लिए भी ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट था. नाउ लेट अस कम टू द चेंजेस रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्स. First is extending fungibility of electronic cash ledger with distinct persons. So this is a very welcome change which has been proposed. सर पहले क्या होता था कि अगर मैं एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हूँ, मेरा कोई कैश एक्सेस कैश पड़ा है इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन CGST, SGST, IGST, तो मैं उसको किसी और हेड में ट्रांसफर कर सकता था by filing certain prescribed form. But I was not allowed to transfer the balance in electronic cash ledger to my different registration, which is the distinct person. So now the government has allowed this transfer also, and they said the balance in electronic cash ledger of a person can be transferred in the electronic cash ledger of a distinct person, provided that there should not be any liability pending in the electronic liability register of that person who is transferring the credit. So it is a very welcome change, and the government will be coming out with the manner how this transfer will be effected. Further, one more thing which needs to be noted here, that the balance in electronic cash ledger can be transferred in electronic integrated tax or central tax, not as GST. So it can be done only in integrated tax or central tax. So I think I have covered this. One more thing I would like to point out here, it only talks about the electronic
cash ledger balance. It does not talk about the electronic credit ledger balance. तो जो बैलेंस मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है, that cannot be transferred to distinct person. The another is option to pay self-assessed tax or amount specified under GST rules for QRMP scheme. तो सर हम सभी लोगों को पता है कि जो डीलर हमारे QRMP स्कीम में है उनको टैक्स पेमेंट की दो ऑप्शन दी गई है. पहला तो है कि वो टैक्स को कंप्यूट करें कि उसके कितनी आउटवर्ड लायबिलिटी दी, कितना उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, और जो बैलेंस टैक्स आता है वो उसको पे कर दें. सेकंड, उनको एक ऑप्शन दी गई है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द सेल्फ असेस टैक्स मैकेनिज्म, अगर उनको नहीं पता तो दे कैन पे 35% ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश इन द लास्ट क्वार्टर. तो ये इनको एक फैसिलिटी दी गई है दी डीलर हु आर अंडर QRMP scheme. So, but if you see this section, the provision to section 39 subsection 7 जो मेरा QRMP से डील करता है, उसमें वो खाली सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मेथड प्रिस्क्राइब करता है. वो जो है लमसम पेमेंट की बात नहीं करता, जो हम कह रहे हैं 35% ऑफ द टैक्स पेमेंट मेड इन कैश. So, in order to give the legal validity to that provision, this section has been amended. And in the amended provision to section 39 subsection 7, they have said he can pay an amount determined in such manner and subject to such condition and restriction as may be prescribed. Meaning thereby जो उन्होंने दो मेथड QRMP स्कीम के केस में प्रिस्क्राइब करे हैं फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, which is the self assessment tax और fixed sum method. तो fixed sum method को पहले लीगल वैलिडिटी नहीं थी, जो उन्होंने by way of this amendment उन्होंने लीगल वैलिडिटी दे दी. तो I think it is just a amendment to make the to give the legal validity to the earlier provision. So statutory backing to notification number 85/2020 CT dated 10/11/2020 read with CBIC circular 143/13/2020 GST dated 10 November 2020. Then the next is concept of availing ITC on provisional basis has been done away with. अगर मैं पहला सेक्शन देखूं, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 which deals with the claim of input tax credit, वो कहता है कि every registered person shall, subject to such condition and restriction as may be prescribed, be entitled to take the credit of eligible input tax as self-assessed in his return, and such amount shall be credited on provisional basis in his electronic credit ledger. Meaning thereby वो जो है जो registered person है, he can take the credit as self-assessed, और जो क्रेडिट होगा वो प्रोविजनली आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा. तो they have used the word provisional basis. So in my view, the law think it appropriate to use a word provisional basis because earlier the two-way matching concept was there and the registered person was availing the credit in on provisional basis subject to matching concept which has been prescribed under GST 2, which was the two-way matching concept, but that has not been implemented. So now the government thought that provisional basis word is not appropriate, so they have amended the law and they have removed the word provisional basis. So meaning thereby now the credit which will be claimed by the recipient will be the final and it will not be provisional. And further there can be the removal of this word provisional basis may be due to various High Court judgment also, like in case of Honorable High Court, in case of Bharti Airtel, the Honorable High Court has opened that जिसमें भारती एयरटेल ने कहा था कि भाई हमने क्रेडिट रिटर्न में कम क्लेम करा GST 3B, इसमें जो है भारती एयरटेल ने GST 3B में क्रेडिट कम क्लेम करा था रिटर्न्स में, तो भारती एयरटेल ने कहा कि माय लॉर्ड मैंने क्रेडिट कम क्लेम कर पाया GST 3B में बिकॉज full functionality of matching concept was not available on the GST portal.
तो जब मेरे को ये मैचिंग फंक्शनैलिटी देते तो मुझे, जब मैं उसको रिकंसाइल करता तो मुझे पता लगता कि ये क्रेडिट मैंने क्लेम नहीं करा है, तो मैं उस क्रेडिट को क्लेम कर लेता। तो the entire burden was on the department to ensure that this credit should have been matched, and because the matching is not taking place and there were technical glitches on the GST portal, because of which the Bharti Airtel was not able to claim the credit. So in this case, the Honorable Delhi High Court has given the favorable judgment and allowed the Bharti Airtel to amend the GSTR 3B of the concerned relevant period. So now coming back to this amendment, now the government thought that because it is a provisional basis, so I think in this case the provisional basis is creating the problem for the government, that when it is provisional, so definitely it will become final when it is ultimately matched. So now they have deleted this word, and maybe because of this judgment only. So now this clause second read as the credit referred to in subsection 1 shall be utilized only for payment of self-assessed output tax. So I'll be discussing the change. So first I have already discussed the word provisional basis has been removed. Now the credit which will be availed in 3B by the registered person will be the final in the first tranche itself. Now this is very important change which they have brought in section 41 subsection 2. Now they say the credit or input tax availed by registered person in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier shall be reversed along with applicable interest by the said person in such manner as may be prescribed. Meaning thereby अगर आपने कोई क्रेडिट क्लेम करा है और आपको पता लगता है कि सप्लायर ने उसका टैक्स जमा नहीं कराया, तो वो क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा along with applicable interest in the manner which will be prescribed in the rules. It further says that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of foresaid supplies, the said registered person may reavail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed. Meaning thereby जब आपने पेमेंट कर दी, जब बेसिकली सप्लायर ने पेमेंट कर दी, तब वो उस रिसिपिएंट जो है उसका रीअवेल कर सकता है. तो सर यहाँ अगेन क्वेश्चन अराइज होता है, मुझे कैसे पता लगेगा सप्लायर ने उस पर्टिकुलर सप्लाई पे पेमेंट कर दी या नहीं कर दी. तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोविजन. नाउ इफ यू सी, दो टाइप ऑफ पेमेंट हैज टू बी इंश्योर्ड बाय द सप्लायर, वो इंश्योर्ड बाय द रिसिपिएंट. फर्स्ट इज सप्लायर ने उस पर्टिकुलर सप्लाई के अगेंस्ट गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी या नहीं कर दी, पहली चीज. दूसरा, यहाँ पर एक ऑलरेडी एक प्रोविजन है जीएसटी लॉ में जिसमें वो कहता है रिसिपिएंट को विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पेमेंट करनी है. अगर आपने तब भी विद इन 180 डेज पेमेंट भी नहीं करी तो भी आपको आईटीसी रिवर्सल करना है, और जब आप पेमेंट करोगे तो अवेल करना है. और सप्लायर ने भी अगर पेमेंट नहीं करी टैक्स की तो आपने रिवर्स करना है और रिक्लेम करना है जब उसने पेमेंट कर दी. तो द लाइफ इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंजेंट provision with the supplier on whom the recipient has not controlled. कि भाई मेरी वन टाइम सप्लाई थी, उनने जमा नहीं कराया. There can be many cases like I am dealing with so many clients कि जहां पर जो है वेंडर रेगुलर नहीं है, तो उस केस में उन्हें जमा नहीं कराया तो मैं क्या करूंगा. तो it is going to create a lot of trouble in the days to come. Now restriction for utilizing the amount in electronic क्रेडिट लेजर. तो पहला तो सर यही एक कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट है. मैंने जैसे कि आपको बताया जहां पर भी सेक्शन 43A का रेफरेंस था वो इन्होंने हटा दिया, जो कि दैट सेक्शन वाज नॉट नोटिफाइड. सेकेंड इज यहां पर इन्होंने एक सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 में चेंज करा और वहां पर कहा द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स और अंडर दिस एक्ट, मतलब सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, इन सच मैनर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस विद इन सच टाइम हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड. तो वर्ड रिस्ट्रिक्शन हैज बीन
added, meaning thereby पहले the word restriction was not there. तो मतलब ये जो सबसेक्शन था वो मुझे empower करता था to utilize the balance available in electronic credit ledger for making payment of output tax subject to certain condition, but there was no restriction. So the question which was coming, जो मेरा rule 86 भी है, जो जिसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप आईटीसी 99% तक यूज कर सकते हैं, वो रूल मेरा अल्ट्रा वायरस था. तो द गवर्नमेंट हैज रियलाइज दिस मिस्टेक कि भाई ये हमारा रूल अल्ट्रा वायरस है और इसकी लीगल बैकिंग हमने लॉ में नहीं दी है. तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द लीगल बैकिंग टू रूल 86B which pertain to 1% of tax liability to be paid in cash, they have amended the section and provided for the restriction. Now let us come to the other significant amendment. So I'll request CA Shilpi Gupta to take over the other significant amendment and move forward. CA Shilpi Gupta, are you there? You can share your screen. Yes. Yeah. I hope my screen is available. Screen is visible to everybody. No, the screen is not visible. Can you please reshare your screen? Yes, I'm screen. Is my screen visible now? Yeah, it is coming. Yes. Okay. So good evening, everybody. Thank you, CA Chitresh Gupta. So let us start with some other significant amendments. One more amendment which has come in through clause 100 of finance bill is there has been some change in the provisions of cancellation of registration as per section 29 subsection 2. कैंसिलेशन के प्रोविजंस में सेक्शन 10 दैट इज कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए प्रोविजन ये था कि अगर they have not furnished the returns for 3 consecutive tax periods, then proper officer can apply for the cancellation of registration. However, now the provision is, as you know sir, कि composition taxpayers के लिए अब जो provision है उसमें they are filing annual return and they are filing CMP 08 on a quarterly basis. Now, with the proposed amendment in section 29 subsection 2, composition taxpayer, if they have not filed the return for the financial year beyond 3 months from the due date, then proper officer can apply for can initiate the cancellation proceedings against such person. Similarly, in case of the registered tax person, this period was 6 months. That means if he has not furnished the returns for a continuous period of 6 months, only and only then proper officer can initiate the cancellation proceedings. Now this 6 months has been removed by that the power now has come with the government that they can prescribe any period post which the proper officer can initiate the cancellation of registration of cancellation proceedings. So again the power has been given to the government that as and when they deem fit, they can initiate the cancellation of registration proceedings. Second is late fee on GSTR 8. Clause 107, section 47 has brought an amendment in section 47. Section 47 deals with late fee. There has been a consequent amendment. Section 38, as you know, has been substituted and matching concept has been removed. So inward in section 38 has been removed from late fees. And a late fee is also imposed on section 52, that is GSTR 8. Removal of reference from section 38 from GST practitioners. So clause 108 basically deals with section 48 subsection 2, that is GST practitioners. Again, this is a consequent amendment whereby the details of inward supplies reference under section 38 has been removed from the 48 subsection 2.
This is again a very, very important and a very much awaited amendment, that is ITC availed wrongly but not utilized. Clause 110 of Finance Bill 2022 now has introduced it. Sir, initially 50 subsection 3, that which deals with interest on input tax credit, specifically states a taxable person who makes an undue or excess claim of input tax credit. इस सेक्शन में जो रेफरेंस था कि अगर टैक्सेबल पर्सन ने अनड्यू या एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, बट देयर वाज अ रेफरेंस ऑफ सेक्शन 42 and 43 which deals with matching concepts. There was lot of litigation. Government जो है अपने नोटिसेस में एक्सेस अवेलमेंट ऑफ आईटीसी पे 24% इंटरेस्ट लगाती थी, और टैक्स एक्सपर्ट्स इस पे आर्ग्यू करते थे कि सिंस the availment of ITC is subject to section 42 and 43. 42-43 has not seen the light of the day, that is matching concept. So this provision is actually not applicable. So there was a lot of tussle between the department and the taxpayers and the legal experts. So government now has amended it with the recommendation of GST Council, and now they say that input tax credit, the interest will be charged only and only when input tax credit has been wrongly availed and utilized. So availment के साथ साथ utilized होना चाहिए. The rate of interest which is proposed in the section is 24%, but through notification effective rate is 18%. अब सर इसमें जो एक मेजर पॉइंट है समझने का वो ये है कि काफी असेसीज ने 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे किया है. So can we can actually think of the avenues of claiming that excess interest which we have paid in the form of a refund. So that avenue can definitely be explored after this provision comes into force. Refund of excess balance of electronic cash ledger. सिर्फ 54 सबसेक्शन 1 ये कहता था कि अगर हमारे पास कुछ एक्सेस बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो वो हम रिटर्न अंडर सेक्शन 39 के अंडर क्लेम कर सकते हैं. This return under section 39 is basically referring to GSTR 3, which had the provision of filing for refund for excess balance in electronic cash ledger. But since GSTR 3 has not seen the light of the day, and if you will see GSTR 3B, उसमें कहीं भी कोई provision नहीं है for claiming such kind of a refund, which is the reason a consequent amendment has been made in proviso to section 54(1). अभी भी अगर आप देखें तो हम RFD 1 के थ्रू इस तरीके का रिफंड क्लेम करते हैं. अब गवर्नमेंट इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्म लेकर आएगी एंड अ मैनर विल बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लेमिंग सच काइंड ऑफ अ रिफंड. Extension of limitation period for refund by UN bodies. So you know that UN bodies अपनी inward supplies के लिए refund claim कर सकती है. Earlier the period was 6 months. 6 months from when the inward supply has been received. Now this has been increased to 2 years. पहले भी ये period increase हुआ करता था through notifications. Now government ने इसे section में ही amend कर दिया है, and now the revised period within which they can claim the refund is 2 years from the last day of the quarter in which the supply has been received. Again, a very important and a very tax compliance amendment which has been made, withholding of or recovery of refunds. Section 54 subsection 10 deals with withholding of the refund because of certain conditions. पहले ये specific section सिर्फ किस केस में अप्लाई होता था? In case of refund of accumulated unutilized ITC. अब इन्होंने ये point हटा दिया है, and now for all kind of refunds withholding provisions will be applicable. So you can consider that this is more of a tax compliance amendment. Therefore, whenever any refund is due to a registered person who has defaulted in furnishing of any return or has not paid any GST liability, his refund can be withheld through this provision. So it is more of a tax compliance amendment. Relevant date of refund against supplies made to SEZ units and SEZ developers. Sir, SEZ units और SEZ developers को जो हम जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं उसमें अगर हमें रिफंड क्लेम करना है तो देयर वाज नो स्पेसिफिक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू क्या उसका रेलेवेंट डेट है. सो नॉर्मली जितने भी ऑफिसर्स थे वो अब रेसिडुअरी प्रोविजन में लेके जाते थे इसको, एंड दे यूज्ड टू कैलकुलेट द रिफंड पीरियड
is 2 years from the date of payment of tax. अभी इसको स्पेसिफिक प्रोविजन लेकर आ गए हैं इन एक्सप्लेनेशन 2. एक्सप्लेनेशन 2 बेसिकली डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ रेलेवेंट डेट. So in case of zero rated supply, now it says the relevant date will be the due date from furnishing of return under section 39 in respect of such supplies. तो जब आप zero rated supplies अपने 39 में डिक्लेयर करते हैं, उसका ड्यू डेट से 2 साल तक आप इसका रिफंड अप्लाई कर सकते हैं. Amendment in 168, again a consequent amendment. Section 168 basically deals with the power of the commissioner to issue directions. इसमें से section 38 हटा दिया गया है, again because a new section has been substituted and matching concept has gone. GST.gov.in common portal notify कर दिया है from retrospective effect, that is from 22 जून 2017. A couple of you might ask a question कि GST तो 1 जुलाई 2017 से आया था, तो 22 जून 2017 से क्यों इसको नोटिफाई किया है? So the reason for the same is कि transitional provisions 22 जून 2017 से applicable हो गए थे, इसीलिए for all purposes GST.gov.in has been notified as a common portal from 22 June 2017. Then again a retrospective amendment. Sir, supply of unintended waste generated during production of fish meal पे exemption आ गई थी from 1st October 2019. इसमें हमें retrospective amendment हुई है, जिसमें 1 जुलाई 2017 से लेके 30 सितंबर 2019 तक भी अगर इसका कुछ सप्लाई हुआ है तो उस पे हमें exemption मिल जाएगी. However, there is a condition कि अगर आपने इन सप्लाईज पे कुछ टैक्स पे किया है तो आप उसका रिफंड नहीं क्लेम कर सकते. Right? So similar is the exemption which is given in case of grant of alcoholic liquor license. Again, alcoholic liquor license पे अगर आपको सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस पे एग्जेम्पशन आई थी बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 25 2019 डेटेड 30th सितंबर 2019. इसको अगेन हमने रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया है एंड नाउ इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017. But again the condition is same कि in case you have paid the tax on it, you cannot claim the refund of it. Now, to my mind, why this provision of refund has been added is that there will be a lot of unjust enrichment. We have taken the tax and we have paid to the government. Now, if I'm applying for the refund will be provided to the supplier, who might not be in a position to actually refund it back to the final customer. So they have said that in case tax has been paid, then refund cannot be applied for that period. That is from 1st July 2017 to 30th September 2019. So that is all. With this, we would like to invite question and answer session.